All right, so yesterday we were talking about evaporation and the factors of affecting evaporation, and we studied Evaporation in which 5 factors. Those factors were temperature, surface area, humidity, airspeed, and nature of liquid or density of liquid, which pretty much means the same thing because the density usually depends upon the nature, the kinds of forces acting in between the molecules of the liquid. So moving on, the warmer the liquid is, the faster it evaporates. That's how the temperature thing works, that if the liquid is warmer, it evaporates faster. Eventually, at a certain temperature, it becomes hot enough for gas to form within the liquid and not just at the surface. So a liquid is slowly converted into a gas. Bubbles of gas appear inside the liquid. This process is commonly known as boiling, right? I hope we understand boiling. But the way we define boiling in these classes and the way we have been defining boiling in the previous classes is much different. Now, in order to understand that, we are going to explain a few things. Just a second. Let me get in a few students. Okay. I was saying that you were defining boiling in previous classes a little bit differently than how you're going to define it now. In previous classes, we have been defining boiling as a change in which liquid changes from a liquid state to gaseous state. So we have been considering this as boiling, but at this level, we define boiling much differently. In order to explain how to define it, there are a few prerequisite definitions that we are going to do. हम एक दो definitions पहले करेंगे, उनको understand करेंगे, फिर हम boiling की तरफ जाएंगे, ठीक है? So it takes place at a specific temperature. इसको हम boiling point कहते हैं. Boiling point for every liquid, pure liquid, is different from other. Usually, actually, it's a characteristic of liquid. Water evaporates fairly easily, ठीक है, has a relatively low boiling point. It is quite a volatile liquid. A thing that has a low boiling point and evaporates easily is known as volatile. And that's for liquids. Volatile liquids mean that they evaporate easily and have a relatively low boiling point. Ethanol with a boiling point of 78 degrees centigrade is more volatile than water. Ethanol is a type of alcohol जो हम शराब के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको एथनॉल कहते हैं, सही. यूजुअली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जैसे ये वर्ड सुनते हैं शराब वाला एक बैड इमेज माइंड में आता है, बट लेट मी टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है. हम इसे केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता. इंजेक्शन से मुराद है कि उनका पीने से या डायरेक्टली इंजेस्ट करने से, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से पास करने से कोई ताल्लुक नहीं होता. सो यहाँ पर हम शराब को यूज कर रहे होंगे बहुत सारे और इम्पोर्टेंट पर्पसेस के लिए जो स्टूडेंट्स इस तरह से शुरू में गैदर नहीं करते, ठीक है. मेनली एज अ सॉल्वेंट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है, इसे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है. हम यही काम कर रहे होंगे यहाँ पर भी. So whenever I use the word alcohol or I say the same in Urdu, or I use the specific name as ethanol, as I'm doing over here, it doesn't mean we are going for a bad image or we are going for a bad point. We are actually talking about its good use, okay, over here. So ethanol has a relatively boiling point of 78 degrees centigrade, which is more volatile than water. It has a higher volatility. Can you all hear me? Yes, sir. yes sir yes sir Is my voice distorted or clear? Sir, Yes, sometimes sir. it's clear and a bit distorted. Okay. Okay, if it's clear for even a single person, that means the speed at my end is good enough, and it might be a problem at your end. Okay? If it's distorted for everyone, what can I say? We can go with the recording.
ठीक? Same goes for you, Adan beta. Okay? So a volatile liquid is the one which evaporates easily and has a relatively low boiling point. So in that case, ethanol has a boiling point of 78 degrees centigrade and water has a boiling point of 100 degrees centigrade. Take a look, we are using the abbreviation of boiling point here, which is BP. So that you can do. Remember, you are never going to use an abbreviation on your own, of your own actually. खुद से abbreviations नहीं बनाएंगे, उन्हें use नहीं करेंगे. अब आप ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां पर abbreviations बहुत important होते हैं और सिर्फ वही abbreviations use किए जाते हैं जो allowed होते हैं. So if there is an abbreviation used in book, you can easily use it in exams. उसमें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, वो marks cut नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप खुद से कोई abbreviation create करना शुरू करेंगे, तो that might get your marks cut. So please be careful about that. Only use the abbreviations that are used in the book. ठीक? So ethanol with its boiling point of 78 degrees centigrade and water with its boiling point of 100 degrees centigrade are volatile liquids, and they have low boiling points relatively and they can easily evaporate. Now, the definitions we have done so far are boiling point, volatile, volatility, boiling, but we're going to define boiling again. But before we do that, there are a couple of definitions more that we need to go with. The reverse of evaporation is condensation. This is usually brought about by cooling. However, we saw earlier that the gas state is one of the most affected by the changes in pressure because it is compressible. We compress the gas from a bigger surface area covering to smaller covering or from a bigger volume to a smaller volume. Okay? So it is possible at normal temperatures to condense a gas into a liquid by increasing the pressure without cooling. Okay? So that we can also do. We can condense a gas into a liquid by increasing the pressure and without cooling it. Otherwise, by cooling it, the process can also be done in the same way. So boiling point of a liquid can change if the surrounding pressure changes. The value given for boiling point is usually stated at a pressure of atmospheric pressure or sea level pressure or standard pressure. For this, we need to go with a certain understanding points. So let me clarify that by going with the drawing. So what I'm going to do is that I'm going to stop the sharing over here and we're going to go for a whiteboard drawing. All right. Then we'll come back to the book. And all these definitions, boiling, condensation, atmospheric pressure, vapor pressure, I'm going to explain all of these words. Okay? With the help of my poor drawing skills. Just give me a second. So I hope you can see a whiteboard in front of you. Okay? So let's get started. In order to understand all of these terms, what we are going to consider is that we're going to consider a simple beaker that we use in lab. And let's suppose that beaker has a little bit of volume of a liquid in here. Let's suppose it's a liquid. Okay. In fact, let's suppose that it's water. Okay. With my poor drawing skills, we now have a beaker in front of us, which is filled with water. Let's start heating this beaker up. Okay. Let's consider that we are heating it up and we are heating it up to a point that it would show us some boiling. From a naked eye observation, how do we see boiling? We start seeing some bubbles appearing in the water. ऐसा ही होता है ना, जैसे जैसे हम water को heat करते हैं, उसके अंदर bubbles appear होना शुरू हो जाते हैं, उससे water vapor formation होनी शुरू हो जाती है, right? So let's consider that we started heating water and the same thing would happen over here. So what would happen at the top layer, we'll see bubbles and the bubbles will get furious and furious, bigger and bigger. And that's how boiling works. And the more furious and the more bubbles there are, we say that water have started boiling and
soon we'll start seeing that the volume of water gets smaller and smaller as there is more and more water vapors on top of it. Okay? So let's, for the sake of understanding, close this beaker with a lid. What would happen? We have liquid over here, and here at these points we'll have some water vapors which will collect over here, which will condense over here at the sides of the beaker, and with the lid of the beaker at the bottom part of this lid will get some water vapors, which will condense over here, which are the colder parts of the beaker, and the bubbles will appear. However, there would be water which would be dripping from these portions back into the liquid. So the water being converted from this state to this state would be boiling. This effect would be known as boiling, in which water will be converted in vapors. However, some of the vapors will go all the way back to the liquid, and this can be considered as condensation. So that's how condensation works. Condensation is actually the opposite of boiling. In boiling, the liquid is converted into vapors, and in condensation, the vapors are converted back to liquid. So when we are heating it, there would be a specific speed for this phenomenon, the boiling phenomenon, and there would be a speed for condensation phenomenon. If the apparatus is closed with the help of a lid, there would be a time when the phenomenon or the speed of boiling would be equal to speed of condensation. Just a second. Yes, Abu Bakr, I'll come to your question. Abu Bakr's question is, what is the difference between evaporation and boiling? Okay, that's a very good question. I'll clear that out as soon as I'm done with the definition of boiling. Now, sorry. We call these small portions, these bubbles, as vapors. Let me tell you, every gas in the world exerts pressure. Okay? What is pressure? Pressure is actually defined in physics as force per unit area. I'm not sure whether you have studied this in physics yet, but you are going to study that in physics, that pressure actually is considered as a formula of force per unit area. So what is the force and what is the area over here? Let me define it with the help of the vapors. We're considering it over here. Now, these vapors are actually independent gas molecules. These gas molecules can move in any direction. They can go up, they can go down, they can go towards left or towards right. They can move in any direction and with a specific speed. Ji Ahmed. Ahmed has a question. Emma Shiraz, Ji, you raised your hand. Okay. I think that was by mistake. So these vapors can move into any direction. Let me tell you, these vapors can act like a ball. Just like we use a ball for playing a cricket ball, sometimes you might have seen if a person is alone and is not able to play a team sport, they play with a single ball. What do? We throw the ball to the wall and it comes right back to us. It's a common game for students who are actually, or for kids who are actually trying to play, but because of the lack of unavailability of any other team player, they have to play alone. ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे अमूमन बॉल के साथ ऐसे करते हैं कि बॉल को फेंकते हैं वॉल की तरफ, वो वॉल से टकराती है, वो उससे वापस आकर कैच करते हैं. This small act can be considered as an example for pressure. Gas molecules भी सिस्टम के अंदर इसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं. A gas molecule is like a cricket ball going all the way towards the wall. In this case, the wall is actually the walls of the container. वो बीकर की walls जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे टकराएंगे और टकरा कर फिर वापस जाएंगे.
बिल्कुल वैसे जैसे बॉल हमारे पास बॉल तक जाती है, बॉल से टकराती है और टकरा कर वापस आती है। जब वो बॉल बॉल की तरफ जा रही होती है तो ये एक सर्टेन फोर्स के साथ जाके एक सर्टेन एरिया पर टकराती है। मैं उस एरिया को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। एक छोटा सा एरिया होगा जिसके ऊपर ये जो है हिट करेगी और एक सर्टेन फोर्स के साथ हिट करेगी। If we divide that force by that area, we get the pressure. As we are getting a pressure for a vapor, for a water vapor over here, so we call that pressure as vapor pressure. So जैसे जैसे हमारे पास फ्लो सिस्टम में वेपर्स फॉर्म होते हैं, वैसे वैसे फिर हमारे पास उन वेपर्स का वेपर प्रेशर भी बनता जाएगा, ठीक है? And in case of boiling, how do we define boiling? When vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Okay, as this is a pure definition, so I'm going to write it this way: as when vapor pressure is equal to atmospheric pressure or standard pressure or external pressure, whatever you'd like to call it, atmospheric pressure, okay, we then okay, so we call it boiling. This is the procedure for boiling. This is how we define boiling at this point. So in order to understand boiling, we need to understand vapor pressure as well as the term atmospheric pressure. Now you might have a question, what is atmospheric pressure? Actually, it's not just the vapor inside that is gliding with the wall of the container. The air outside, the air molecule outside will also collide with the wall of the container in the same way this one does. So there is some pressure from outside and there is some pressure from inside. The inside pressure is known as vapor pressure because that is mostly due to the vapors present inside this environment. There would be more vapors present inside the environment than outside, and outside there would be just air, and air would be exerting some pressure. When this internal pressure is equal to this external pressure, in which case internal pressure is vapor pressure and external pressure is atmospheric pressure, the pressure exerted by the atmosphere all the time, okay, that's what we call boiling for a liquid. Now you might have a question कि क्या air हम पे भी pressure exert करती है? Yes, it does. Air molecules सारा वक्त 500 meters per second की speed से आकर हमसे टकराते हैं. You might have a question, हमें कुछ होता क्यों नहीं है जब हमसे टकराते हैं? ये इतने साइज में छोटे होते हैं molecules कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. ये सारा वक्त हमसे टकराते रहते हैं. इनफैक्ट जब हमें थोड़ी थोड़ी हवा लगती है तो हमें अच्छा फील होता है. You might have seen कि जिस दिन थोड़ा सा अच्छा हवादार मौसम होता है हम उसे अच्छा फील करते हैं. अगर ना हो, we use fans, we use air conditioners, we use many different things to have some air thrown upon us to make us feel good, right? हवा हर एक को उस हिसाब से वो environment, वो atmosphere हर एक को अच्छा लगता है. Okay, so with my poor drawing skills, are you able to understand a few more definitions that I was talking about, such as boiling, vapor pressure, atmospheric pressure, condensation, simply pressure? If you have any questions, please ask them now. Excuse me, sir. Ji beta. The water pressure and the atmospheric pressure is equal in boiling. Boiling starts happening when the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. When the vapor pressure is not equal to atmospheric pressure, is less than the atmospheric pressure, we say the boiling phenomenon hasn't started yet. The boiling phenomenon starts when the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Clear? Thank you. You're welcome. Okay. Oh, I forgot the question from Abu Bakr. Abu Bakr asked me a question. Then what's the difference between boiling and evaporation? That's a very good question. And let me clarify at this point that boiling and evaporation has a huge difference. Though the processes are same, but the temperature at which these processes occur are not same. So Abu Bakr, I'm going to answer your question completely once we get back to the book. So class, do you have any questions from this diagram? No, sir. Because if not, then I'm going to close this diagram and I'm going to get back to the book.
And I'm also going to complete my answer for Abu Bakar's question. Let me just get back to the book. All right, there we go. Back at the book. So Abu Bakar, in order to answer your question, okay. Abu Bakar, take a look. When we were discussing evaporation, we were discussing a liquid that is exposed to air. It starts evaporating. That evaporation may occur at room temperature or any other temperature, right? But when we were talking about boiling, we said that the boiling occurs when the bubbles of gas appear inside the liquid, and this process is known as boiling, and it takes place at a specific temperature. That's the biggest difference. Boiling takes place at a specific temperature, which is known as boiling point. However, evaporation may occur at any temperature. The rate of evaporation might get slow with a lower temperature or high with a higher temperature, or faster evaporation occurs at a higher temperature, but at a specific point when the evaporation is maximum and when the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. That's the temperature what we call boiling point in our terms, and that's when the phenomenon of boiling starts. Before the phenomenon of boiling, if the evaporation or conversion of liquid to gas uh, considered as happening, then this happening is known as evaporation. I hope we are clear. बॉइलिंग पॉइंट से के टेम्परेचर से पहले पहले तक जितनी भी कन्वर्जन होगी, जितनी भी एवेपोरेशन, जितनी भी लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होगी, हम उसे एवेपोरेशन कहेंगे. लेकिन जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, उस टेम्परेचर पर पहुंच के जितनी एवेपोरेशन होगी, उसको हम बॉइलिंग कहेंगे. ठीक? Are we clear, Abu Bakar? Are we clear for the whole class actually? Sir, Okay, well, let me take an example over here. Ji beta. the evaporation will occur before and after the boiling, like it will always occur. Evaporation? Yes. Yes, it occurs all the time. Let me take an example. Now, as you can see in this pink portion, that the boiling point of ethanol is quoted as 78 degrees centigrade, and that of water is quoted as 100 degrees centigrade, right? So let me clarify myself over here. When the temperature is exactly 100, water will start boiling. But any kind of conversion of liquid to gas will be taken as boiling. So 100 से नीचे तक जितनी भी conversion हो रही है, उसे हम evaporation का नाम देंगे. अगर water vapors में convert हो रहा है 99.9 पर भी, तो भी वो boiling नहीं है, वो evaporation है. So 1 degree, 2 degree, 10 degree, 20 degree, 30, 50, 70, 90, 99, 99.9, तब तक जितनी भी liquid to gas conversion है, और इन सारे temperatures पे ये conversion होगी, हम उसे evaporation कहेंगे. लेकिन exactly at 100 degree centigrade जब water vapor में convert होगा, तो तब हम उसे evaporation नहीं कहेंगे, क्योंकि तब हम उसके boiling point पे से convert कर रहे हैं, तो तब हम उसे boiling कहेंगे. ठीक? Same goes for ethanol. 78 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के हर टेम्परेचर पर evaporation होगी, लेकिन exactly at 78 डिग्री सेंटीग्रेड boiling होगी. So liquid gas में सारा वक्त convert होता रहता है, specifically for these volatile liquids that we are discussing about. ठीक है? इनके केस में सारा वक्त ऐसा होता रहेगा, लेकिन उस सारे वक्त के प्रोसेस को हम evaporation कहेंगे, और exactly जब boiling point के ऊपर ये process होगा, तब हम उसे boiling कहेंगे. Are we clear? I hope Yes, now we sir. are clear. Talking about it mathematically clarifies it much more, or in a much better way than with simple examples, right? Sir, Yes.
after the boiling, there are still the water vapors. So are they not evaporation? Like it's not occurring evaporation. So you are asking a question about what happens after 100 degrees centigrade. What happens at 101, 102, 103, Yes, yes, right? yes, yes. Okay, so at 100 degrees centigrade, actually the temperature will stop, and until all of the water has been converted into water vapors, and then the temperature will start rising. But then the temperature is not for a liquid. Actually, that temperature is for a gas, and gas can be heated to any temperature. Okay? And what happens after? There is a huge gap, but if we increase it too much, that same gas can be converted into a fourth state of matter, that is plasma. So that the same water vapors can be converted into another state of matter. Let me tell you, there are not just three states of matter. So far in science, with a little bit of discussion, we have 7 to 8 different states of matter. The three states of matter, solid, liquid, and gas, are just the basic ones. So your question is a very good question. What happens after that? What happens at 101? Or what happens at 500 degrees centigrade? Or 1000? Or 5000? Or 10,000 degrees centigrade for that matter? Yes, we can change the state of matter, but that happens at a much higher temperature, such as 20,000 degrees centigrade or 25,000 degrees centigrade. And yes, those temperatures are possible, are very much possible. Are we clear? So हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपका कोर्स स्टिक करता है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तक, तो हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तक रहते हैं. लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे ही आप एफएससी या ए लेवल्स में जाएंगे, हम आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड क्रिस्टल्स ये पढ़ाना शुरू कर देंगे. फिर हम आपको फोर्थ भी पढ़ाएंगे, फिर हम आपको फिफ्थ भी पढ़ाएंगे. इस तरह जैसे जैसे आप स्टडीज में आगे जाते हैं, हम आपको फिर सिक्स स्टेट ऑफ मैटर, ये सेवेंथ, फिर ये भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं. So it's all about levels. 7 to 8. है जी बिल्कुल. So far आप यही सोचते आते हैं कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. ऐसा नहीं है. हम अब बहुत सारी बाइफिकेशंस बना चुके हुए हैं, हम ज्यादा डिस्कशंस करते हैं. मैं बहुत सारी चीजों में आपका कॉन्सेप्ट बहुत बदलूंगा, जिसमें आप बहुत बेसिक चीजों में ये दो तीन टाइप्स पढ़ते रहे होंगे, और अब मैं आपको कह दूंगा 10 टाइप्स होती है, 20 होती हैं, 4 होती हैं, 8 होती है. इस तरह से दैट वुड हैपन इन केमिस्ट्री. ये बहुत ज्यादा होता है इस लेवल पे. हम आपको हायर स्टेप अप्स कराते हैं ताकि आप हायर लेवल के लिए रेडी हो सकें. अभी भी हम आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको रेडी कर रहे हैं फॉर हायर लेवल. मींस मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ पढ़ाए नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Are we clear? Yes, sir. Okay, so getting back to the topic that we were, the boiling point of a liquid can change if the surrounding pressure changes. Now, the surrounding pressure, which I was calling atmospheric pressure, okay, of which the value is usually taken at sea level. सारी दुनिया में सी लेवल सेम रहता है, so सारी दुनिया का एटमॉस्फेरिक लेवल जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वो सी लेवल पे मेजर किया जाता है, क्योंकि सी लेवल जो होता है वो सारी दुनिया के लिए सेम रहेगा. वाटर अपना लेवल मेंटेन करते हैं, ये हमने क्लास 5 में पढ़ा होता है, भूल जाते हैं हम. बट लेट मी टेल यू, लिक्विड टेंड्स टू मेंटेन इट्स लेवल. तो पूरी दुनिया में जो लिक्विड है वो ऑफ कोर्स सी लेवल के हिसाब से, वाटर के हिसाब से होगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जिसे हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, हम उसे सी लेवल पे मेजर करते हैं. अगर वो प्रेशर चेंज हो, ठीक है, सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एंड लेट मी टेल यू दैट चेंजेस as we go for a higher altitude. जैसे जैसे हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मसलन माउंटेन रेंजेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट मरी, लेट्स टॉक अबाउट नारान, कागान. हमारे पास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो माउंटेनियस हैं, ठीक है, जो सी लेवल से काफी ऊंचे हैं, राइट. हम नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी बहुत सारी माउंटेन्स हैं जिन्हें हम अपने टूरिज्म पर्पसेस के लिए विजिट करते हैं. और इवन हमारे तो कुछ ऐसे जानने वाले भी होते हैं जो रहते ही वहीं पर हैं, जो रहते ही माउंटेनियस एरियाज में. तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं बेटा, एक्चुअली प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू लो होती जाती है, उसकी वैल्यू फॉल करती जाती है. और जैसे जैसे आप जमीन की डेप्थ पे जाएंगे, लेट्स सपोज आप जो ना ओशन बेड की तरफ जाना शुरू होते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह से हमारे पास पहाड़ होते हैं अर्थ के अंदर ऊंचाई पे ले जाने के लिए, इस तरह हमारे लिए डेप्थ्स में डिप्स होती हैं जिन्हें हम खाइयां बुलाते हैं, वो थोड़ी नीचे की तरफ जा रही होती हैं, ठीक.
तो उससे हम डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ पे जाने से प्रेशर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइट पे जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इफ द सराउंडिंग प्रेशर फॉल्स, सराउंडिंग प्रेशर फॉल करता है, फॉर एग्जांपल मरी हिल्स पर जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, एबटाबाद में जाएंगे, नारायण कागान पे जाएंगे, या इवन उससे भी आगे जाएंगे, तो सराउंडिंग प्रेशर फॉल करता जाएगा। अगर सराउंडिंग प्रेशर फॉल करे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन, द बॉइलिंग पॉइंट फॉल्स, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। The boiling point of water at standard pressure is 100 degrees centigrade. On a high mountain, it is lower than 100 degrees centigrade. Let me tell you, Murray Hills पे water का boiling point 100 नहीं होता, 98 हो जाता है। ठीक है, right? दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन हमारे पास कौन सी आती है, कौन सी पीक है? Does anyone know the name? The highest point on the planet? Mount Everest. माउंट एवरेस्ट, राइट। माउंट एवरेस्ट पे यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से फॉल करके 69 डिग्रीज पे आ जाता है। If you want to quote these examples on the book, you may write the examples on the book, but these are just for your understanding. Murray Hills पर the water boiling point is not 100, it's 98 degrees centigrade. ठीक है, and at the top of Mount Everest, at the peak of Mount Everest की सबसे ऊंची पोजीशन की बात हो रही है, बेस की बात नहीं हो रही। ठीक है, that would be approximately 69 degrees centigrade. ठीक, सराउंडिंग प्रेशर इंक्रीज भी कर सकता है। सराउंडिंग प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं आर्टिफिशियली, लाइक वी यूज प्रेशर कुकर्स एट होम, जहां पर हम उसको चीज को बंद करके उसको अच्छी तरह से कवर करके उसके ऊपर थोड़ा सा वजन डाल के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज भी करते हैं। एंड यस, in pressure cookers, boiling point of water is raised to around 120 degrees centigrade and the food cooks more quickly at that higher temperature. हम खाना ज्यादा अच्छा बना लेते हैं। आपने देखा होगा, we do that with meat, we do that with pulses. हम दालों के साथ, गोश्त के साथ ये काम करते हैं कि हम उनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज करके 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, खाना जल्दी कुक हो जाता है। वही मीट अगर जो हम सिंपल तरीके से कुक करते हैं तो 4 to 6 आवर्स लेता, वही मीट हम 15 to 30 मिनट्स के अंदर प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। ठीक, so these are the examples when standard or atmospheric pressure is changed, and of course the boiling point of liquids also change. ठीक, I hope you are clear with the example, but it's about time. अगर आप इस एग्जाम्पल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या सेपरेटली मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी ईद की छुट्टियों के बाद उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, एक और चीज, वन लास्ट थिंग, अगर अभी भी आपके पास YouTube वाला चैनल नहीं है तो वो चैनल का लिंक जरूर अपने फ्रेंड से ले लें। एंड आई वाज थिंकिंग कि चूंकि हमारे से 2 क्लासेस हो रही हैं वीक में, हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, उसमें से भी 1-2 क्लासेस ऐसी हैं जो मेरे इंटरनेट इशू की वजह से नहीं हो सकी, तो मैं 1 या 2 वीडियोस अगले टॉपिक्स की बनाऊंगा जिसमें मैं उनकी एक्सप्लेनेशन छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो आप देख लें, वो जब मैं करूंगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो देख लेंगे तो हम अपने इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। इस तरह से हुआ कि वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो देखेंगे पहले से, फिर उस वीडियो को दोबारा क्लास में पूरे को डिस्कस करेंगे सो दैट कि हर किसी को वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे। जी हसन, तो मैं नोटबुक प्रिपेयर कर रहा था, मैंने पूछना था कि केमिस्ट्री की नोटबुक नैरो लाइन है या इंटरलीफ? इंटरलीफ बेटा। The first notebook will be interleaf based. The next notebooks first और second को छोड़कर अगली जो notebooks होंगी वो फिर both pages will be lined. जी बिल्कुल। जी लिया, जल्दी पूछें, class time is almost over. रीत की कितनी छुट्टियां होंगी? बेटा I have no idea. I think इस तरह क्वेश्चन या तो कोऑर्डिनेटर से पूछें या फिर बायोलॉजी क्लास में मिस सायरा से पूछें, उन्हें ऐसी चीजों के बारे में पता होता है, वो हायर पोजीशन पे, उनके पास एग्जाम डिपार्टमेंट भी है, तो वो आपको जरूर इसका ठीक आंसर देख सकती हैं। तो अगर आपका बायो लेसन अभी तक नहीं हुआ है ना, वो आस्क मिस सायरा, शी विल बी एबल टू टेल यू। इस तरह की जितनी सर होमवर्क क्या है? मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया बेटा। ओके। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो आपको देखनी होगी, बट आई विल इन्फॉर्म व्हेन आई विल मेक दैट वीडियो। ठीक है, आई वाज थिंकिंग कि ईद की छुट्टियों में बच्चों को तंग ना किया जाए, लेकिन उसके बाद कर लेंगे। ठीक, ओके बेटा, हैव अ गुड वेकेशन, अल्लाह हाफिज।